से मेरा आग्रह, दीप प्रज्वलन की पावन परंपरा के साथ, भारतीय परंपरा के साथ आज के इस प्रोग्राम का विधिवत शुभारंभ, इंटरैक्टिव मीट विद द मेंटर्स। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समाविद्या विद्यादान करो ममा, विद्यादान करो ममा। ज्ञान की देवी, प्रकाश की देवी, वीणा वादनी सुरभ्या देवी हमारे कंठ में विराजमान हो और सीए मोटो सॉन्ग प्ले करने की अनुमति। आप सभी अपने स्थानों पर यथास्थान करें। सुप्तेषु जागृति यैष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामोच्छो उच्छो निर्विमानः निर्विमानः तदेव शुभ्रं तदेव शुभ्रं ब्रह्म तद्ब्रह्म माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, माँ सरस्वती से आराधना और ऐसी शुभेच्छा कि हम सभी के जीवन में प्रकाशमान रहे, उनकी ज्योति यूं ही यथावत रहे, हमारे ज्ञान का मार्ग वो प्रशस्त करती रहे और भगवान गणेश हम सभी का मंगल करें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। अतिथि देव के समान, अतिथि हमारे लिए इष्ट है, भगवान है। अतिथियों का मान, अतिथियों का सम्मान, ये राजस्थान के गौरव में पहचान की बात है। तो चलिए आदरणीय मंच सौंपते हैं, मंचासीन मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों से मेरा आग्रह, सर्वप्रथम CIRC चेयरमैन आदरणीय CA किशोर हेमराज जी बर्डिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे सम्मान के साथ। आदरणीय CCM CA ज्ञानचंद जी मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मंच पर आप अपना स्थान रहेंगे। आदरणीय CA रोहित जी से मेरा आग्रह, आदरणीय CA हैरी पटेजा जी से मेरा आग्रह, आदरणीय CCM डॉक्टर CA अनिल जी गोयल को मंच पर एस्कॉर्ट करें। तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का स्वागत, परिवारजनों का स्वागत। CA पूर्वा से मेरा आग्रह, CA रंजीत कुमार चेगरवाल, आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट, और मेरा आग्रह है CA प्रतीक गोयल जी से आप भी आएँ और सर का स्वागत करें मंच पर। CA रोहित नागपाल जी चेयरमैन ब्रांच श्री गंगानगर, आदरणीय CA प्रेसिडेंट ICAI CA के सुनील तलाटी जी का स्वागत। सबके दिलों में प्यार और सबका आभार, ऐसा प्यारा ये CA परिवार। आप सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो।
और ऐसे ही अजीज मेहमान परिवार के सदस्य आज इस महफिल में पधारे। दोबारा 15 हाँ जाइए। राजस्थान की शान हमारा परिधान और बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। ये अपडेट है। साथी के साथ अभिनंदन करते हुए हमारे सभी साथी मेंबर्स जो हमारे परिवार में पधारे हैं। सर्वप्रथम कड़ी में आदरणीय सीए अनिकेत सुनील तलाटी जी प्रेसिडेंट, आपको बुके प्रेजेंट किया जा रहा है, साफा शॉल उड़ाकर सम्मान, साथ ही मोमेंटो। मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स से मेरा अनुरोध है आदरणीय प्रेसिडेंट साहब का सम्मान, आभार। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय प्रेसिडेंट सीए अनिकेत सुनील तलाटी जी। अंदर कराओ यहाँ ना धन्यवाद, आभार बहुत छोटे शब्द हैं सर। भरपूर प्यार के साथ आप श्री गंगानगर की धरती पर पधारे हैं और आप हमेशा यहाँ आते रहें, ऐसी शुभेच्छा। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय प्रेसिडेंट सीए अनिकेत सुनील जी। सम्मान की अगली कड़ी में आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ICAI सीए रंजीत कुमार जी अग्रवाल, मैनेजिंग कमेटी से पुनः आग्रह, शॉल उड़ाकर, साफा पहनाकर, बुके प्रेजेंट कर, मोमेंटो दे आदरणीय रंजीत कुमार जी अग्रवाल का धन्यवाद, स्वागत, आभार। सर भावों से स्वागत, शब्दों से स्वागत, फूलों से स्वागत, साफे से स्वागत। तो अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। आदरणीय सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए डॉक्टर अनुज जी गोयल हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम तालियों के साथ उनका स्वागत। आगे जाऊंगी आदरणीय सीए निदेश चावला जी से, आदरणीय सीए विजय मिड्ढा जी से आप बुके प्रेजेंट कर, साफा पहना, शॉल उड़ा, मोमेंटो भेंट कर अनुज गोयल जी का सम्मान, सत्कार, आभार। आदरणीय सीए नीरज चावला जी, आदरणीय सीए विजय मिड्ढा जी, जोरदार तालियों के साथ हमारे सीसीएम मेंबर डॉक्टर अनुज गोयल। धन्यवाद सर, धन्यवाद नीरज सर, विजय सर। सीसीएम मेंबर आदरणीय सीए रोहित वाटिया जी अग्रवाल हमारे बीच हैं, तालियों के साथ स्वागत। आदरणीय सीए पवन जी मित्तल, आदरणीय सीए सतीश जी मित्तल से मेरा आग्रह, आदरणीय सीए रोहित जी का स्वागत, सम्मान, सत्कार, आभार। जोरदार तालियों के साथ मेहमान का स्वागत परिवार में पधारने पर।
सतीश सर। सम्मान की अगली कड़ी में आदरणीय CCM मेंबर CA ज्ञानचंद जी मिश्रा। मेरा आग्रह है आदरणीय CA DD गुप्ता जी से, आदरणीय CA विजय अरोड़ा जी से आप आए। प्रेजेंटेशन ऑफ बुके, सम्मान साफे के साथ शॉल उड़ाकर सत्कार और आभार मोमेंटो भेंट कर। आदरणीय CCM मेंबर CA ज्ञानचंद जी मिश्रा। जोरदार तालियां बजती रहें हमारे मेहमानों के लिए। आपको कहाँ जाने के बस ताली बजाना भी एक तरीके का योग है, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जी को री-एनर्जाइज करने। धन्यवाद DD गुप्ता जी, धन्यवाद विजय अरोड़ा जी। सम्मान की अगली कड़ी में आदरणीय CIRC चेयरमैन CA किशोर गेंगराज पड़िया जी। मेरा आग्रह है आदरणीय CA विजय मोरर जी से, आदरणीय CA विकास गर्ग जी से आप आए। सर का सम्मान, सत्कार, आभार, स्वागत। आदरणीय CA विकास गर्ग जी, आदरणीय CA विजय मोरर जी। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमान CA किशोर गेंगराज पड़िया जी के लिए। स्वागत के क्षण, ये विलक्षण क्षण हम सभी साक्षी बने हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस तालियों के साथ लगाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर, विकास सर। सम्मान की कड़ी में अतिथियों का सम्मान कराते हुए CA नितिन गुप्ता जी, हमारे रीजनल काउंसिल के मेंबर। मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय CA सुनील सेतिया जी से, आदरणीय CA सोम प्रकाश अग्रवाल जी से आप साफा प्रेजेंट कर मोमेंटो भेंट कर आदरणीय RCM मेंबर CA नितिन गुप्ता जी का सम्मान, सत्कार, स्वागत। जोरदार तालियां। सर सर थोड़ा इधर वेलकम नितिन सर, धन्यवाद सुनील सर, धन्यवाद सोम प्रकाश सर। आगे बढ़ते हैं CA RCM मेंबर आदरणीय CA अनिल कुमार यादव जी। मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय CA संजय बंसल जी से, आदरणीय CA गौतम बंसल जी से साफा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर हमारे मेहमान CA अनिल कुमार यादव जी के परिवार में पधारे हैं, उनका स्वागत, सत्कार। शशि सर से मेरा आग्रह आप साथ देंगे संजय सर का। प्रेजेंटेशन ऑफ साफा, प्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटो टू CA अनिल कुमार यादव जी, आर रीजनल काउंसिल मेंबर। सर एक मिनट सर। धन्यवाद अनिल सर, स्वागत। धन्यवाद शशि सर, धन्यवाद संजय जी। CA राजीव गुप्ता जी, आदरणीय रीजनल काउंसिल मेंबर हमारे बीच मौजूद हैं, तहे दिल से आभार, स्वागत। आगे रहेगा आदरणीय CA वासु सिंगल जी से, आदरणीय CA अनिल मित्तल जी से साफा पहना मोमेंटो भेंट कर परिवार में पधारे आदरणीय राजीव गुप्ता जी का सम्मान, सत्कार। आदरणीय CA पवन गर्ग जी से मेरा आग्रह आप पधारें और
स्वागत की कड़ी में आदरणीय CA राजेश गुप्ता जी, रीजनल काउंसिल मेंबर। धन्यवाद राजीव सर, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद पवन जी। अग्रिम पंक्ति में सम्मान की कड़ी में आदरणीय CA आकाश भगवती जी, प्रेस्टिजियस रीजनल काउंसिल मेंबर। तालियों के साथ स्वागत सम्मान आदरणीय CA आकाश जी। सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय CA सुनील बेनीवाल जी को, आदरणीय CA राघव गोयल जी को। आप सम्मान साफा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर आदरणीय रीजनल काउंसिल मेंबर CA आकाश भगवती जी। तालियां बजती हैं। धन्यवाद आकाश सर, धन्यवाद सुनील सर, राघव सर। अग्रिम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय रीजनल काउंसिल मेंबर CA अभिषेक पांडे जी का तालियों के साथ स्वागत। मेरा आग्रह रहेगा CA पवन सिंघल जी, CA विनीता मोदी जी से आप सम्मान करें हमारे आदरणीय रीजनल काउंसिल मेंबर CA अभिषेक पांडे जी। तालियों के साथ स्वागत। साफा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर। सम्मान की अगली कड़ी में आदरणीय CA लोकेश महेश्वरी जी, RCM मेंबर। मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय CA दिनकर बंसल जी से, CA आशीष गुप्ता जी से सम्मान की कड़ी में साफा पहना मोमेंटो भेंट कर लोकेश सर का स्वागत। CA आशीष गुप्ता जी, CA दिनकर बंसल जी। तालियों के साथ हमारे RCM मेंबर्स का भी स्वागत, अभिवादन। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। शब्दों से पुनः स्वागत, आभार, समर्पण। समारोह को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं आवाज जरूरी है किसी को बुलाने के लिए, इशारों से अक्सर बात नहीं होती। जुनून जरूरी है किसी की मंजिल को पाने के लिए, बिना इरादों के तो कोई शुरुआत नहीं होती, बिना इरादों के तो कोई शुरुआत नहीं होती। तो चलिए सशक्त इरादों के साथ सशक्त चेयरमैन को मंच सौंपती हूँ। इनॉग्रल एड्रेस के साथ आदरणीय CA रोहित नागपाल जी। तालियों के बीच स्वागत। हेलो एवरीवन, मैं सबसे पहले इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे बीच हमारे ICAI प्रेसिडेंट अनिकेत सुनील तलाटी जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल जी उपस्थित हुए। हमारे एक इन्विटेशन के लिए हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ हमारे कहने पर आए। मैं सभी मेंबर एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अनिकेत सर का हमारे SSP पोर्टल के अंदर काफ़ी योगदान रहा है। जो भी हम अपडेशन देख रहे हैं हमारे SSP पोर्टल से जो भी हो रहा है, आज वो अनिकेत सर की मेहनत का ही नतीजा है। और
सर के कार्यकाल में अभी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जो नवंबर में सर के नेतृत्व में हो रही है, तो हम उसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक इसमें मैं छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस बार सर के कार्यकाल में एक जो हमारा फाइनल का और पीसीसी का रिजल्ट सेम टाइम पे आया है, तो वो सर के ही कारण हुआ है, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव रिजल्ट भी हम सबको पता ही रहता है, तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा 15 to 20 डेज उनको मोर प्रोवाइड हुए हैं, तो ये भी सर निकेत सर की मेहनत का नतीजा है। और सर मैं हमारे पीपी सर रंजीत जी का भी बहुत बहुत स्वागत और आभार करना चाहूँगा, जो भी हमारे यूनियन का सिस्टम जो हमारे बीच आया है और रंजीत सर की ही मेहनत करने के है, वो यूनियन को लाना हमारे रंजीत जी हैं। उसके बाद मैं हमारे सभी सीसीएम मेंबर्स अनुज जी का, रोहित रवाटिया जी का और ज्ञानचंद मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और हमारे किशोर जी का और उनकी टीम का सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और बाकी सभी कमेटी मेंबर दूसरी ब्रांचेस आए हुए हमारे फाउंडर चेयरमैन पवन मित्तल जी का और सभी मेंबर एंड स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित सर। सौम्य व्यक्तित्व के साथ अपनी बात को सहजता से कहने का ये अंदाज चेयरमैन ब्रांच गंगानगर आपने सुना, आभार भी और अपनी बात भी कह दी, और सभी का परिवार में स्वागत। वेलकम इनॉग्रल एड्रेस के बाद आगे बढ़ते हैं। सेशन को एड्रेस करने के लिए सर्वप्रथम आदरणीय CIRC चेयरमैन CA किशोर हेमराज बढ़िया जी को मैं मंच सौंपती हूँ। तालियों के बीच सर का स्वागत, अभिवादन। Thank you, Nikita ma'am. Highly respected President of Institute of Chartered Accountant of India, CA Aniket Suril Talati sir, Vice President CA Ranjit Kumar Agrawal ji, रीजनल काउंसिल मेंबर जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल से आते हैं, हमारे तीनों ही सेंट्रल काउंसिल मेंबर डॉक्टर CA अनुज गोयल जी, CA रोहित रवाटिया जी एंड CA ज्ञानचंद मिश्रा जी। रीजनल काउंसिल मेंबर्स जो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल से मेरे साथ में मेरे कलीग अभिषेक पांडे जी, नितिन गुप्ता जी, आकाश बरगोटी जी, राजीव जी, अनिल भाई, हमारे सिकासन चेयरमैन लोकेश महेश्वरी जी, my seniors in profession and my dear friends, आज एक ऐतिहासिक दिन में यहाँ आकर जो महसूस हो रहा है इसे मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊंगा, बट राजस्थान की धन्य धरा या यूँ कहूँ कि राजस्थान का अंतिम शहर जिसे एग्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इस सिटी में आकर ऐसे दिन में जबकि एक नई ब्रांच का उद्घाटन होने का है, और जो कि हमारे सेंट्रल डिवीजन की 49th ब्रांच है, और उसके पास ही में लगा हुआ शहर गंगानगर, श्री गंगानगर। जब हम हनुमान नगर में थे तो हमें यह सारी गैदरिंग दिख रही थी, आज हम गंगानगर में है तो भी यह सारी गैदरिंग दिख रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सर ये दोनों ब्रांच का एक कोऑर्डिनेशन इस तरीके का है कि यहाँ के मेंबर्स पहचान ही नहीं आ पा रहे हैं श्री गंगानगर के या हनुमान नगर के हैं। तो मैं दोनों ही ब्रांचेस को बहुत साधुवाद दूंगा कि आप लोगों के बीच में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन है, और कहीं ना कहीं यह कोऑर्डिनेशन ही हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। क्योंकि इस साल हमारा विशेष साल है, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th year of our existence, so a lot of programs has been planned by the Institute of Chartered Accountant of India, जिसमें हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स अलग-अलग सब्जेक्ट में बताएंगे भी, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एक ब्रीफ अगर मैं बता पाऊँ कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। 50 ब्रांचेस हम ऑपरेट करते हैं,
और 35 चैप्टर्स हमारे अंडर में आते हैं। हमारे साथ में 12 रीजनल काउंसिल मेंबर होते हैं और 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं। ये सेंट्रल काउंसिल मेंबर ही हमें गाइडेंस देते हैं और हम उन्हीं के गाइडेंस को पास ऑन करके ब्रांचेस तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे सीनियर का आज हमारे बीच में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत डिटेल में क्योंकि आज हमारे काउंसिल मेंबर को बताएंगे, तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ में पूरी टीम को बधाई देता हूँ। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही टीम यहाँ मौजूद है। मैं दोनों ही टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक दिन के अंदर में दोनों जगह में इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं धन्यवाद भी करूँगा कि आप लोगों ने सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल मेंबर के सारे ऑफिस लीडर को आज इन्वाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद किशोर सर, बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, यहाँ से सोच का एक डायमंड जुबली में मनाएं। तो ऐसा आह्वान है मंच से। आगे बढ़ते हैं। सम्मान की कड़ी में आदरणीय सीए सचिन जैन जी, एक्स RCM, एक्स ऑफिसियो मेंबर, मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय सीए शंकर अग्रवाल जी से, आदरणीय सीए शिव गोल्यान जी से साफा पहनाकर आदरणीय सीए सचिन जैन जी का स्वागत सम्मान। धन्यवाद सर। परिवार में पधारने पर स्वागत, आभार। सेशन को एड्रेस करने के लिए आदर और मान के साथ आदरणीय CCM मेंबर सीए ज्ञानचंद जी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। अपने ज्ञान की अनुभूति को हमारे साथ बांटने के लिए आदरणीय CCM मेंबर, तालियों के साथ स्वागत, अभिवादन। Thank you, MC of the program, Madam Nikita. At the outset, we worship the goddess of knowledge, Ma Saraswati, for her benign blessings on us and our personal profession. Surya Devi Sarvati Vidya Rupen Sanskata, Namasastri, 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 Namo Namo. Torch bearer of the profession, and of course the first person of the profession, exceptional personality, thoughtful and wonderful human being, and of course a leader who needs no introduction at least to us, CA and K. Sunil Talati. The other leader, second to him, a person whose accent speaks louder than words. In last 2.5 months, we have witnessed the working, the thoughtful approach, and execution quality of the profession, CA रंजीत अग्रवाल जी। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों लीडर्स के लिए खड़े होकर बहुत जोरदार तालियों से कर सकते हैं। Thank you all. Very senior council member amongst us, CA Anuj Goyal ji, my younger brother and council member from Rajasthan itself, CA Rohit Bhatia ji. On the dais, very dedicated chairman of Central India Regional Council, Kishore Baladia ji. Chairman of the branch, Rohit Nagpal ji, Vice Chairman Hari Pateja ji,
Secretary Pratik Goyal ji, and all the managing committee members. Managing committee members of other branches who have come across to Sri Ganganagar, bureaucrats, politicians, press media, and of course, most importantly, the future of the profession, students. Good evening to all of you. आज मैं डायस में बैठ के सोच रहा था कि हमारे लीडरशिप के सामने हम लोग क्या ऐसा उनको बताएं कि हम प्रोफेशन के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, हम हमेशा सोचते हैं हमें मिले। तो दिस इज वन वे ट्राइबिंग कि काउंसिल क्या कर रहा है, रीजनल काउंसिल क्या कर रहा है, ब्रांच क्या कर रहा है, लाइक दैट। लेकिन एज ए मेंबर अगर हम सोचें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ICAI जल सेट बाय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर का एक बात था कि ICAI में जो आई है, आई स्टैंड्स का मीन, ICAI, आई स्टार्ट्स मी एंड एंड्स विद मी। सो हम लोग क्या इंट्रोस्पेक्ट करके कभी अपने आप को देखते हैं कि हमने ICAI को कितना कंट्रीब्यूट किया है, एंड प्रोबेबली वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम ब्रांच चेयरमैन बन के सेवा करें, वो कंट्रीब्यूशन हमारे हर एक्ट्स एंड डीड से होता है, उस ऑडिट रिपोर्ट के सिग्नेचर से होता है, उस कंप्लायंस से होता है, उस डॉक्यूमेंटेशन से होता है, या उन सभी परिस्थितियों से होता है जिससे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के 75 साल के गौरवशाली इतिहास को देख के इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको आगे ले जाने की सोचें। प्रेसिडेंट साहब, मैं एक ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में कंक्लूड करूँगा, क्योंकि जब हमारे बीच में हमारी लीडरशिप तो ज़्यादा हमें आपसे सुनना है, लेकिन मैं एक रामचरित मानस का एक अंश आप सबको सुनाना चाहूँगा। वो अंश ये था जब हनुमान जी जा रहे थे लंका, श्री रामचंद्र जी का पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के, कि हमें उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी इतने दिया था कि आप जाओगे मिल के आओगे, कुछ करोगे नहीं। तो उन्होंने बोला तो कैसे पहचाने कि सीता जी हमें, तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसे बताया, कैसे पहचाने। तो जब वो गए तो उनको एक सुरसा नाम की राक्षसी थी जो समंदर में रहती थी। तो सुरसा से उनकी मुलाकात, सुरसा को उसने कहा कि मैं तुम्हारा भोजन करता। हनुमान जी बहुत बुद्धिशाली भी थे, विवेकशाली भी थे, बहुत बलवान भी थे। मैं उन्हें पूरा पेशेंस रखा, उसको कहा कि नहीं हमें आप जाने दो, बहुत जरूरी काम है। लेकिन सुरसा की जिद पे, और सुरसा वो राक्षसी नहीं थी, बेसिकली वो हमारे देवों द्वारा भेजी गई एक गुप्तचरी थी, जो ये पता लगाने भेजी गई थी कि ये जा तो रहे हैं लेकिन काम भी करके आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। सो हुआ क्या कि जब वो दोनों में बात हुआ, लास्ट क्लिप में लाइन आपको स्ट्रेंजर सुनाता हूँ। हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता के प्रभु सुनाऊँ, तब तो बदन बैठी हूँ आई, सत्य का हम नहीं जानते। मतलब मैं भगवान श्री राम का कार्य कराऊँ, हमें इतना टाइम दो, उसके बाद मैं आऊँगा, हमें आप दर्शित कर देना कार्य। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, द टाइप ऑफ डेडिकेशन हनुमान हैज फॉर राम। सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज लेकर के हुए थे कि हमें जाना है, उन्होंने कहा हम मृत्यु के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इतना मौका दे कि प्रभु श्री राम का काम करके मैं वापस आया। सो प्रोबेबली ये प्रोफेशन हम सबका प्रोफेशन है। क्या इतने शिद्दत से कभी इस प्रोफेशन के लिए हमने सोचा कि नहीं इस शिद्दत के साथ हम रिवर्ट कर पाए, जो मैंडेट हमारी लीडरशिप ने दिया है उसको हम कहीं डिलीवर कर पाए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, जो हमारे रेगुलेटर्स हमें आई कर रहे हैं उसको कहीं से डिलीवर बेस्ट तरीके से कर पाए। आई एम श्योर अबाउट इट, वी आर डूइंग इट। बट पॉइंट इज कि
कि हमें हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। आज सरकार अगर 5 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन की सोच रही है तो आई एम श्योर अबाउट इट दिस बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रेडी। अपने आप नहीं हो सकता है ये हम लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। जब रात को 2 बजे कहीं छोटी सी जगह में आपको 480 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं तो ऐसी छोटी छोटी जगह जाता हूँ जहाँ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है। रात को 2 बजे जीएसटी रिटर्न डाल रहा होता है, इनकम रिटर्न डाल रहा होता है। So this is the contribution of the Institute of Chartered Accountants in India towards the economy, but at the same time, this is the right time to introspect ourselves and to see that whether the I of ICAI is really doing its best or the profession at large. मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं ब्रांच को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। हालांकि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है और हमें बहुत बार राजस्थान में आने में भी लगता है कि हम जाए ना जाए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे बहुत मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, पास में कुछ हमारे बहुत मित्र हैं, तो उनसे मिलने का मन होता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम होता है जब हमें आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा इस काम और गौरवशाली भूमि में आप लोगों के साथ कुछ समय हमेशा बिताने का मौका आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यथा नाम तथा गुण। Indeed a man of wisdom. By his thought, by the implementation technique he has produced, with the excellent example of the most famous and the most pioneer devotee, Lord Hanuman. Wonderful sir, शत नमन and साधुवाद है। आपने जो एग्जाम्पल लिया, बात भी दी और अधूरी भी छोड़ दी। ये ज्ञान का दीपक जो हमारे आदरणीय सीसीएम मेंबर ने यहाँ प्रज्वलित कर दिया है, निश्चित तौर पर रेस जो है बहुत दूर तक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को एड्रेस करने के लिए आदरणीय सीसीएम मेंबर सीए रोहित जी को मंच सौंपती हूँ। अपनी प्रकल्पना के साथ हमारे बीच प्रस्तुत हैं आदरणीय रोहित जी। धन्यवाद एमओसी। कार्यक्रम में आने से पूर्व पवन जी भाई साहब के साथ ऊपर बैठे थे, तो हमने कहा सुबह के मुकाबले कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाना है। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा सर जितनी सुबह ऊर्जा थी हो सकता है शाम को उतनी ऊर्जा ना रहे, बट फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय मेंबर्स, माय सीनियर्स, आप सब लोगों में से वो ऊर्जा हम सबको मिलती है कि मंच पे जो इस तरह बैठे हैं उनका बोलना खत्म नहीं हो सकता और अब आपका सुनना खत्म नहीं हो सकता। इसी बात के साथ शुरू करता हूँ। आदरणीय हमारे इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी जी, उपाध्यक्ष रंजीत अग्रवाल जी, आई एम थैंकफुल टू both of the leaders of our profession कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट, इनको हनुमानगढ़ से दिल्ली जाना था और 9:20 की रात को इनकी अपने अपने घर की फ्लाइट अवेलेबल थी। प्रेसिडेंट सर की 9:20 पे अहमदाबाद की और वाइस प्रेसिडेंट सर की 9:30 पे कलकत्ता की, कि रोहित भाई हमको एक दिन छुट्टी का मिल रहा है, 5 तारीख को इंस्टीट्यूट में छुट्टी है, तो हम भी छुट्टी बना सकते हैं क्या? तो मैंने कहा सर आप दिल पे हाथ रख के जो भी कॉल लेंगे मैं उसको मंजूर करूंगा। इन्होंने दिल पे हाथ रख के कॉल किया, लेकिन बोला नहीं यार, मैं मेरी ब्रांच के लिए आऊंगा, मैं गंगानगर के लिए आऊंगा, मैं मेरी छुट्टी को कैंसिल करूंगा, गंगानगर ब्रांच को समर्पित करूंगा। तो आई एम थैंकफुल टू द लीडरशिप, प्रेसिडेंट सर एंड वाइस प्रेसिडेंट सर, ही हैज ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस अहमदाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू गंगानगर, गंगानगर टू हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ टू वापस गंगानगर, और फिर रात को 10 बजे की ट्रेन लेके सुबह वापस दिल्ली, और दिल्ली से फिर अपने घर जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। तो हम सब लोगों का हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आग्रह, रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट करा और आप हम सब मेंबर्स को एड्रेस करने के लिए आज के कार्यक्रम में आए। सर, मेरे ब्रांच के चेयरमैन रोहित नागपाल जी, CIRC चेयरमैन किशोर बड़े जी जो रायपुर से हैं, ये भी पूरी मेहनत करके
ऑल अक्रॉस 2-3 जगह से उनके यहाँ पर पहुंचे। सीनियर मेंबर इन द काउंसिल अनुज गोयल जी को मैं तब से देख रहा हूँ जब मैंने सीए में एंट्री नहीं करी थी। उस समय भी के काउंसिल में थे और आज के काउंसिल में हमें ये नहीं लगता कि हमारे सीनियर काउंसिल मेंबर है, हमारे बराबर के काउंसिल मेंबर है। अगेन अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ज्ञान मिश्रा जी, जिन्होंने और मैंने दोनों ने सन 2012 में एक साल राजनीतिक करियर इंस्टीट्यूट की भाषा में अगर बात करते हैं तो हम जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो सब राजनीतिक व्यक्ति हैं। यदि प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम दोनों ने साथ में प्रारंभ करा और हमारा बेस्ट पार्ट ये रहा कि ब्रांच में भी ये साथ रहे, रीजन में भी ये साथ रहे और काउंसिल के इलेक्शन भी हम साथ में हारे और काउंसिल के इलेक्शन भी हम साथ में जीते। मेरे साथ बैठे हमारे काउंसिल मेंबर ज्ञान मिश्रा जी, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रांच प्रदीप भाई, मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैरी जी, पूर्वा जी, किंशुक भाई, द इमीडिएट पास्ट चेयरमैन धीरज भाई, द फाउंडर चेयरमैन पवन मित्तल जी, विकास गर्ग जी, एस के पुत्रा जी, आशीष गुप्ता, सुनील सेठिया, प्रमोद जी, कमल गर्ग, करमवीर जी, आप सब पास्ट चेयरमैन, आप सब लोग आज हम सब के बीच में बैठे हैं और हम सब लोगों में से जो एक व्यक्ति आज होने थे हमारे परम आदरणीय और हमारे सबसे सीनियर काउंसिल मेंबर प्रकाश शर्मा जी जो हमारे जयपुर से वो इन एब्सेंशिया है और उन्होंने आज यहाँ होना था बट कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्होंने कहा रोहित अब तू संभाल आ गया तो मेरे को यहाँ भेजा उन्होंने कि मुझे संभालना है। तो उनको भी हम रिमेंबर करते हुए माय सीनियर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, गंगानगर इतना इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर, जयपुर और हनुमानगढ़ के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस आप सब लोग समझ सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट ओवर हियर। ज्यादा बात बोलूंगा नहीं क्योंकि आज हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं सर मेरी जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कमेटी करियर काउंसलिंग की, तो आज का हमने जो इवेंट रखा है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा था हमने सर। तो आप ये सेशन शुरू होने से पहले हमने 1.5 घंटे का एफडीपी करा और हमारा एफडीपी 3 घंटे का होता है। तो 1.5 घंटे का पार्ट के अंदर हमारा वो एफडीपी हुआ और हम सब भी एफडीपी कर रहे हैं क्योंकि हम जो बोलेंगे वही हमारे काउंसलर्स जो है अंडरस्टैंड करके स्कूल्स में टीच करेंगे। और आज के जो मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि है, वो हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। तो उस एफडीपी को कंटिन्यूएशन में हम आगे लेके जाते हैं। एंड आई मस्ट शेयर सर, तो हमारे सेशन में जिन्होंने एफडीपी लिया सर, मैं अपन सबके अटेंशन के लिए मैं बोलना चाहूंगा सर, जो हमारे मुख्य वक्ता जिनको हम सभी ब्रांचेस में लेकर जा रहे हैं वो सर जीबी मोदी जी यहाँ मौजूद है सर। वो एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ मेरे इंस्टीट्यूट की ब्रांच एस्टेब्लिश नहीं है और ये सभी जगह करियर काउंसलिंग के सेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपको स्कूल में कैसे फॉर्म लेना है। ये झुंझुनू से आ रहे हैं सर, जो कि अब हमें उम्मीद है कि अगले साल तक हम ब्रांच के लिए निवेदन करेंगे। वहाँ पे भी संख्या 250 मेंबर्स की हो चुकी है, तो हम उस प्रोसेस में हैं। रास्ते में सर आपके साथ एक चर्चा करी थी, यदि आप उस चर्चा के बारे में आपके उद्बोधन में कवर करेंगे कि हमको आप आए हैं तो यहाँ के लिए भी हमारे को जो ब्रांचेस की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षा यदि पूरी होगी आपकी स्पीच में आप कवर करेंगे तो उसके लिए मैं पूरे आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। करियर काउंसलिंग कमेटी के माध्यम से हमने इस साल एक विजन बनाया है कि हम लोग इस साल गिनीज वर्ल्ड ऑफ अटेम्प्ट करने वाले हैं कि पूरे विश्व के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपने एप्लीकेशन दी है कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम लोकेशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित करने का अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें मुझे आप सब लोग मेंबर्स, आप सब लोग काउंसलर्स जो हैं उस दिन आइडेंटिफाई करके सभी स्कूल्स में जाके यदि काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम गिनीज वर्ल्ड ऑफ अटेम्प्ट को हम पूरा कर पाएंगे। समय आज हम सब लोगों का सुनने का है, माननीय हमारे अध्यक्ष का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी बात को यही विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। Thank you, Rohit sir, with so much of enthusiasm, the spark you have. Naturally, it will enlighten every soul present out here. Thank you for the address with a humor. तो हंसी का माहौल अक्सर सीए तो हंसते कम देखा रोहित सर। इट्स jovial time for me as well. सेशन को आगे बढ़ा
Dr. Anuj Goyal ji. With a vision, welcome Dr. Anuj Goyal on dais. A big hand for CA Dr. Anuj Goyal to share his vision with all of us. Thank you, Mr. Ceremony. Goddess of knowledge, Master Saraswati. Our international president of the Institute of Chartered Accountants of India, CIRC, and why he is international president? Because we are having the presence of our members in each and every part of the world. हो सकता है आलू ना मिले उस जगह, पर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर मिलेगा. And we had World Congress of Accountants for the first time in the history of India, in India, under his leadership, and now we are going to have in New Caliber the International Conference in November at Ahmedabad, place from where Modi ji comes and Aniket ji comes. So very, very big round of applause to Aniket ji. I think we are really fortunate to have him as the leader of the profession, as the brand ambassador of the profession, and on behalf of all the leaders present here of the Central Region, all the branches of the Central Region and all the members present here, I assure him that we will put our 100% to see that how his vision, his mission can be achieved in the best possible manner. We are having our Honorable Vice President. ये वो सूर्य हैं जो पूरब से उगता है. And I think अगर इनको यूनिट का जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. And it is such a great reform for the accounting profession, not only for our country, but a lot of accounting bodies in other parts of the world have also come, have taken the technology, we have trained them, and now they have adopted and they have implemented UNIT in their respective accounting bodies. And I think the way he has contributed each and every committee of the Institute of Chartered Accountants of India, we just have 40 by 40. Which is now the chairman of the CMIP. It was his vision, and in spite of the fact that it was very, very important, very close to his heart, he took a decision that after becoming vice president, he will be the part of that program, and I think we deserve a very, very big round of applause from all of us. तालियों में जाने हैं पूरे जोरदार तालियां for our Honorable President and Vice President. We are having our very, very prominent Central Council members, C.A. रोहित रवादिया जी. इनका पहले नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान से हैं और यहाँ पे आ तो गए हैं, वापस भी जाना है. और अगर ये कुछ यहाँ पे आनंद भरी बातें कर सकते हैं तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हम लोग बड़े प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सर को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, और उसके बाद भी मैं जरूर उनकी तारीफ में दो शब्द कहना चाहूँगा. और मैंने सोचा नहीं क्या कहना चाहूँगा, अब सोच रहा हूँ. अभी प्रकाश जी यहाँ पर नहीं है. प्रकाश जी बड़े प्रसन्न होने होंगे जो इन्होंने उनके लिए उद्बोधन किया. एंड लेट मी टेल यू, आई एम सीइंग हिम व्हेन ही वाज इन द ब्रांच, व्हेन ही वाज इन द रीजनल काउंसिल, एंड नाउ ही इज इन द सेंट्रल काउंसिल. द ट्रू फायर ब्रांड लीडर इफ वन कैन हैव, आई थिंक वी फाइंड दैट क्वालिटी in the Rohit ji, and everywhere he would try that how he will really do something very, very concrete. और अगर उसके लिए किसी से उन्हें आमने सामने के जनता कुछ करना भी पड़ेगा, हमारे में वो शक्ति नहीं, तो जब तक वो शक्ति नहीं आती तब तक मैं आपका साथ दूंगा, आप उसकी चिंता न करें.
मैं तैयार हूँ और एक बार जोरदार तालियों से रोहित जी का भी अभिनंदन। We are having, of course, CAGC Mr. my younger brother from Ganganagar itself, and he is contributing in a great way for the cause of the profession, for the cause of the members, for the cause of the students. So very, very round of applause, friends. So let's start your bade soch rahe hain. And of course, we are having Kishore Bhadia ji, honorable chairman of the Central Regional Council from Chhattisgarh, from Raipur, and we are having vibration under his leadership now in the whole of the Central region. We are looking forward for the best regional council award this year. We are Raipur is hosting ICAI award for excellence in financial reporting, and of course under the leadership of Kishore and his entire team. I think the way he is trying to see that how he can take each and everybody together, something really great. So very, very big round of applause to Kishore Bhadia. And of course we are having the chairman, young and dynamic chairman, going with Nagpal ji. मुझे लगता है मुझे परमानेंट यहीं पे आके रहना चाहिए। मुझे हफ्ते में एक हफ्ते में दूसरी विजिट है मेरी और जो पहली थी पीयर रिव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम था, यहाँ पर 2-3 ब्रांचेस से हमारे लीडर्स आए हुए हैं। वी आर हैविंग द लीडर्स ऑफ जयपुर, वी आर हैविंग द लीडर्स ऑफ बीकानेर। इन द मॉर्निंग इन हनुमानगढ़ वी वर हैविंग द लीडर्स फ्रॉम द पंजाब बठिंडा ब्रांच एंड ऑफ कोर्स वी आर हैविंग द लीडर्स फ्रॉम हनुमानगढ़। उन सभी ब्रांचेस में और श्री गंगानगर में we already had the peer review training program. So this is the favorite region. जो अपने सेंट्रल रीजन के लिए, अपने स्टेट के लिए आप दिखाने के लिए अहमदाबाद में भी कर लेते हैं, कलकत्ता में भी कर लेते हैं, but our first priority is to see that how we can build the capacity of our central region branches and the branches of the Rajasthan, practically each and every branches of the Rajasthan, and now of course Ganganagar, which has been from today 50th branch, 50वीं ब्रांच हमारे सेंट्रल रीजन की। इस 1 जुलाई को हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 75th ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट अमृतकाल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ICAI जी and Ranjit ji, and we are having Rohit Nagpal ji as the chairman of the Sri Ganganagar branch in this Amritkal of the Institute of Chartered Accountants of India. 1 जुलाई 2023 को we will be celebrating our 75th foundation day of the Institute of Chartered Accountants of India under the leadership of all of them. So very, very big round of applause, friends, for all of you. We are of course having this in the branch. Pratik Goyal ji, Vice Chairman of the branch. हरी भटिया जी, इमीडिएट पास चेयरमैन धीरज मीला जी, उमा मित्तर जी अवर्धन कुबे एंड सिकासा चेयरमैन धीरज मीला जी एंड केशव मित्तर जी और मैनेजिंग कमेटी मेंबर एंड ऑल आवर ऑनरेबल सीनियर्स एंड डियर फ्रेंड्स एंड द टीम ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल, वाइस चेयरमैन नितिन गुप्ता जी, सिकासा चेयरमैन अनिल यादव जी, and we are having Abhishek Pandey ji, our senior regional council member and Sikasa member from Kanpur, Rajiv Gupta ji, Akash Bhaturi ji and Mukesh Vaisali ji from Kota, and all our honorable seniors from each and every part of the central region from Rajasthan and dear friends. I think Sri Ganganagar is one branch of central region, one branch of Rajasthan, which I have visited the maximum. When I went to the regional council, जब रीजनल काउंसिल में था प्रेसिडेंट सर, तो श्री गंगानगर और बीकानेर ऐसी 2 जगह थी जहाँ पर प्रैक्टिकली every fortnight I was there, and I was very happy that back to back we had the Bikaner and Ganganagar branches as soon as I entered into the central council, and both the branches are really putting their best to see that how really they can do for the members, for the students, for the professors, and now of course Hanumangarh branch, जिस पर हनुमान जी का
do something really concrete for the professor. We are the world leader now. We are the largest accounting body. India ने दो उपलब्धियां प्राप्त की हैं very recently. एक उपलब्धि ये प्राप्त की है कि that now we are having the maximum population as per the United Nations. President sir, एक तो अभी हमने चाइना को पीछे करके, और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है. We are the youngest country of the world. We are the youngest profession of the world practically, and 45% are the girls. So we are having the representation of the boys as well as girls. और दूसरी पक्की ये प्राप्त की है कि now the Institute of Chartered Accountants of India is the largest accounting body of the world. It has been announced by Nikhil Talati. If you add the number of members and students, because the students are also the part and parcel. अभी President sir, Vice President sir बताएंगे that now very soon we are going to have this new course curriculum in place, and we are having the maximum concentration how we can really do something very concrete for the future generation of chartered accountants or FCAs, and how we can really build their capacity, how we can have compulsory residential training program for them, and I am quite confident that Ganganagar branch will certainly try to do the best for the future generation of chartered accountants. I would not like to come between all of you and our honorable president and vice president. Sir, I am really grateful, really indebted to the team Ganganagar. और सबसे बड़ी बात हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मैंने कभी नहीं कि ओवरनाइट जर्नी करके भागते एयरपोर्ट से आप रेलवे स्टेशन में पहुंचे, ओवरनाइट जर्नी करके आप अबुवाल में उतरे, और उसके बाद तुरंत बैक टू बैक द प्रोग्राम एट हनुमानगढ़, द प्रोग्राम एट श्री गंगानगर, और पूरी रात की जर्नी करके he will be returning back to Delhi. He was having n number of options. बीकानेर से दुबई करते हम नाम रख नहीं सकते, बट गंगानगर आना था, गंगानगर में सब लोगों से मिलना था, आपसे इंटरेक्ट करना था. So we are really grateful to both the president sir and vice president sir. Very proud of you to put your hands once again. Welcome you all, president and vice president sir. Thank you very much, friends. Thank you, Anu sir, for your enlightening words and highlighting the deliberations and the efforts taken nationwide and what a visionary leadership. All the CCM members, their thoughts, their sharings, their vision. Thank you all. Moving ahead, I'd love to invite the person on the dais. बेशक हम सभी को इंतजार है, जो हमारे विजनरी लीडर्स यहाँ पधारे हैं. अमृत महोत्सव के दौरान और कुछ अमृत की वर्षा होगी, तो ये एक नमूना है उसका. तो चलिए आदर के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ICAI CA रंजीत कुमार अग्रवाल जी, तालियों के साथ सर का स्वागत मंच पर. आमीन. Youngest president of ICAI in the history of our institute. He is below 40 years of age and he is the president of our institute. So you can see how charismatic he is. We have our three very respected council colleagues, Anuj Ji Goyal, Yam Misra Ji, Rohit Duvate Ji. Of course, we are here with the special insistence of the Rohit Duvate Ji that you have to come to Ganganagar branch, but all these three council members from this region deserve a big round of applause because they are working day in, day night in our institute, and our president will tell you what kind of role they are doing and how the institutes in various committees they are working. We have chairman of this very important branch, Rohit Nagpal ji, Secretary Pradeep Goyal ji, and we have our first
founder chairman of this branch, CA Pawan Mittalji, and all the chairmen. Because of their hard work, we can see the branch, the progress the branch is making, and so many members and students are getting benefit because of this Ganganagar branch. All the hard work of all the past chairmen of this branch led by Pawan Mittalji and now Rohit Nagparji. They also deserve a big round of applause. All the regional council member, branch managing committee member, and very respected members of this profession, and all the FCA, we call them FCA for future chartered accountant you have decided to join one of the best careers. There are 3,500 careers in this country, and you have decided to choose to be a chartered accountant. I think you have taken the right decision in your career. The way the Institute of Chartered Accountants of India is today, we are 140 crore people in this country, and we have $3.5 trillion economy, and we have youngest population of the world in India. And digital transaction, if you talk about the total digital transaction of this world, 40% are happening in India. So if you see all this data, and in this data, only 3,70,000 chartered accountants, out of them, only 1,50,000 practicing chartered accountants are working day in, day night to make this country prosper, growing, and one of the 5th largest economy of this world. So you can understand what the role the chartered accountants are doing in this country. And if you talk about the jobs market also, Indian chartered accountants are appreciated and recruited across the world, one of the best professionals in the sense that if you go to the campus placement, now the campus placement we have made this 6 lakhs of the minimum package to 9 lakh, and all the chartered accountants who are in last 3 years has been recruited by the various companies. Average package is 12.5 lakh rupees, freshers they are getting, and across the world, 40,000 chartered accountants are working in various parts of this country and the world. They are not doing the data entry job. They are framing the policy, they are sitting in the boardroom, and they are CEO and the CFO of the MNC of that country in that country. So that is the role the chartered accountants are playing. And if India is growing and the $3.5 trillion is going to be $30 trillion, $40 trillion next 25 years, the chartered accountant who are doing this kind of job has to be a major role and major player for the growth and development of this country. And if you talk about the MSME sector also, if the MSME is the largest contributor in the job market, employment generation, the growth of the economy, you people, small chartered accounting in all the small area, they are helping for tax collection, compliances, and framing the policy, banking sector. Your role are equally important for this sector. But at the same time, now the world is changing, and in this new era of changing, the roles are also changing. Earlier you used to file the income tax return by going to the income tax offices. Now it has become faceless assistant. GST is also going to be the faceless. All the ROC returns are virtual. You don't have to physically go for all these compliances. So do you think the role of the chartered accountants are going to be diminished? There is a survey, there is a trend that if the digital transactions are helping so much, and because of the GST, the informal economy is going to convert to the formal economy. The humongous data is going to
the certification, the verification of this data is required. And who will do that? So the chartered accountant is the only breed and only profession who can certify, authenticate these kind of humongous data which is going to be generated. But are we skilling ourselves to do that job which is coming? Now the trend is that skill is the new currency. Now if you don't have the skill, then you are not able to do the job which the government and the stakeholder are expecting you to do that job. So that's why the Institute of Chartered of India through various committees are trying their best to enhance or reskill the skill of our chartered accountant. The role will be more in the years to come, but the mode of the performance the role will change. The traditional job, the daily routine, the normal filing job will be history. It will be taken over by the system, by the technology, artificial intelligence is coming, blockchain is coming. So the online routine in nature, the traditional job will be over. So what we will do? We have to reskill our member in the sense that what value addition you are doing in the face and the balance sheet of your clients. Now the client will not hire you just to file a return. That will be taken over by the system. They will hire you how you can make a new change in their thought process, how their balance sheet can change, how their balance sheet you can create value, how the expenditure can be reduced and revenue can enhance. That kind of role is required of a new chartered accountant. And that's why if we and you as an institute and a member are ready to reskill ourselves, to enhance our skill, to change our thought process in this new era of digital world, then nobody can reach the Indian chartered accountant, the role, the capacity and the capability they have to do this job. Because no other professional can do this kind of job which we are doing. So that's why under the leadership of our President, Aniket Talati and all the council colleagues, 31 council colleagues, under various committees, we are trying our best effort how to enhance the skill set of our members. And for that, whatever technological development, software, audit tool, quality of audit, whatever is required, we are doing. And if you have to grow and we have to grow, we have to adopt this new technology. And only then, in the next 25 years, we are witnessing the 75th registers. Next 25 years, we can also say if India is going to be the developed country, because of that, chartered accountants are equally responsible to make this country a developed nation. I wish all of you best of luck. Thank you. Thank you so much, sir. Well said, indeed. Skill is the fuel driving the ignited minds of the nation. In Chris, you provided the beauty and the passion to the profession by your words. Gratitude. Thank you. Moving ahead, the youth icon himself, with so much of honor, pleasure in our hearts and soul. A big round of applause for the man himself, President ICAI, CIRC. To address and share the vision. Thank you, sir. Thank you very much and a very good evening, ladies and gentlemen. On the dais, the Honorable Vice President of the Institute, CIRC Ganganagar,
my colleague in the council, Anuj Goyal ji, Rohit Wadia ji, Kyan Mishra ji, CIRC chairman Kishore Baradia ji and his entire team of regional council members who are here, chairman of the branch, C. Rohit Nagpal and his entire managing committee team, past regional council members, past managing committee members, members of this wonderful branch, students and my dear friends. It gives me an immense pleasure and it's truly wonderful to be in your midst this evening. Ever since we came in the morning, like Anuj bhai mentioned, we took a train last evening from Delhi and arrived at Abor and came to the inauguration of Hanumangarh district branch, and it was a matter of true pleasure, the love and affection that we got in the entire journey. And let me say that today also, as soon as we entered this hall, the kind of love and affection and respect that you have all given us, truly grateful to all of you for these wonderful memories. We will remember and cherish this forever. So thank you very, very much. जब सुबह में वो और शाम को भी फेलिसिटेशन हुआ तो स्टॉल उड़ाएगी, बट मानना पड़ेगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के लोगों को, मुझे लगा मई महीने में शॉल मिल रही है, शायद नवंबर में ही काम आएगी, पर आप लोगों ने मौसम ही बदल दिया। दो दिन से जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शायद आज रात को ट्रेन में ही शॉल काम आ जाएगी। गुजराती आदमी जो चीज जब मिलती इस्तेमाल कर लेते हैं खुद में। I would say that yes, it's been a truly wonderful experience this entire day, being with the members of Sri Ganganagar and Hanumangarh. किसी ने बताया राजस्थान की आखिरी ब्रांच है, और मुझे तो आगे ऐसा लगा कि राजस्थान की पहली ब्रांच है, यानी राजस्थान की शुरुआत दिल्ली से पास है, बॉर्डर से पास है, हरियाणा बगल में, पंजाब बाजू में। I think the mix of the culture of all these states, which truly makes this entire experience unique for all of us. As was mentioned, we have our Honorable Vice President Ranjit Agarwal ji, and it was very rightly mentioned that the entire unit was conceptualized with him. I just want to give certain statistics, क्योंकि काफी बार जब हम सेंटर्स में आते हैं और लोगों को प्रैक्टिस की क्या प्रेजेंस है, what is the kind of attestation audit work that we have, people don't realize the size. Almost close to 5 crore units have been generated in the 3 years since Unia's began. और ये statistics क्यों important है जब आज मैं श्री गंगानगर में आप सबसे बात कर रहा हूँ? If I was to assume a bare minimum charge of 1,000 rupees, and mind you, in this 5 crore units are the units of the top listed companies, top banks, top manufacturing companies, and so many other important audits that get done throughout the country. But even if I was to simply multiply this by 1,000, you can imagine that the size of the audit profession in India is 1,000 into 5 crore, 5,000 crore, and this is just audit and attestation practice. There is so much work. For example, GST return filing, GST annual return and monthly filing, income tax return filing, consulting work, and so much other work that our chartered accountants are doing, where unit may not be compulsory. What I'm trying to tell you is that there is an enormous scope for practicing chartered accountants, for professionals, for you to come into this wonderful profession. And I'm addressing all the young students also and the young chartered accountants who are attending this program. People may tell you that opportunities are restricted. Believe me, numbers speak for themselves. And as has been said in the past, if you look at the growth trajectory of India, it took us almost close to 60 years to reach 1 trillion economy. The next 2 trillion was reached in 2014-2015. Today we are at 3.5 trillion. And going forward, it is not going to take that long for us to add $1 trillion to our economy. All projections state that when India turns 100 at 2047, the size of the economy will be north of $35 trillion.
आज 3.5 ट्रिलियन, तब 35 ट्रिलियन। और पॉपुलेशन की जो अनुज भाई ने बात की, we are already the largest population, the youngest population, and once this number stabilizes and of course the growth of the economy goes forward, the average per capita income rises, you are going to see more and more opportunities. And the biggest number which should be startling to all of us is that in a country of 140 crore, there are only barely 140,000 chartered accountants in practice who are actually working in practice, and out of those who are generating dividend will probably be close to only 1 lakh. So a lot of them have a certificate of practice, but may not be in actual day-to-day practice. And with the growth of the economy being so exponential, it is my firm belief that it is centers like Ganganagar, it is smaller cities, smaller towns, which are going to dominate the future of not just the profession, but also of the economy. And why do I say that? Because today, if you look at the Central Council, which is nothing but a reflection of our membership, for the first time, Central Council में हमारे पास काउंसिल मेंबर है बड़ौदा से, हमारे पास काउंसिल मेंबर है औरंगाबाद से, हमारे पास काउंसिल मेंबर है और भी छोटे सेंटर है विशाखापट्टनम, सेंट्रल काउंसिल मेंबर आपके रीजन से भोपाल, जहाँ से आज तक कभी सेंट्रल काउंसिल मेंबर नहीं आए, वहाँ से सेंट्रल काउंसिल की प्रतिनिधित्व हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि no longer is the profession of chartered accountancy restricted to the large centers of Bombay, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, or Hyderabad, or even Ahmedabad. But now it is true, we've seen in the regional councils, and you are seeing it in the central council, the composition of the representatives is changing. And when the composition of representatives is changing, it is very clear that the composition of the membership at large is changing. And why this is happening? I think post-COVID, there is a huge realization that it doesn't matter in which part of the country you live or where you are working from. You can have a laptop at home and you can work for the largest companies sitting in Ganganagar, sitting in Hanumangarh. I can at least tell you that in Hanumangarh, when we were there, we met young chartered accountants who are working for top corporates, and they are still staying in that city and being able to work there. What I am trying to say is the kind of opportunities post-COVID, thanks to technology that have opened up, there is going to be tremendous growth of our profession and tremendous opportunities which will come to all of you even in smaller centers. Today, the largest companies of the world, if you ask them, and we were in UK recently, the Honorable Vice President and myself, to renew the MOU between India and UK, that is between ICAI and ICAW. This MOU is approved by the Indian Cabinet, and we went to sign it to renew it. And when we were there, we were told by ICAW, the Institute of Chartered Accountants of England and Wales, today 3 out of 5 transactions across the world get recorded in India. तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहीं भी हो रहा है, आप पिज्जा खा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, होटल के रूम में रह रहे हो लंदन में, फ्लाइट बुक कर रहे हो न्यूयॉर्क में, 5 ट्रांजैक्शन अगर पूरे विश्व भर में हो रहे हैं, तो उसमें से 3 ट्रांजैक्शन की बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग इंडिया में हो रही है। दैट इज द काइंड ऑफ importance, and that is the kind of domination our chartered accountants have on the entire global ecosystem. And what is happening, I don't know how many of you have realized this, but the global accounting centers are now getting developed in India. And these global accounting centers are not just in the larger towns of Bangalore, Hyderabad, or maybe Ahmedabad or Mumbai, but they are now expanding to Tier 2, Tier 3 cities. Therefore, if you go to a Rajkot, you go to a Jaipur, you go to Udaipur, you go to other parts, you will see so many chartered accountants who are sitting in India but are able to service the globe. And therefore, this profession, especially to my young friends here, I would like to tell you, offers tremendous opportunities for you, not just in the local market, to work in income tax, GST, company law, corporate laws, insolvency, valuation, forensics, all these areas. But you can actually make yourself known and have a wonderful work experience in any part of the world, sitting right here in Sri Lanka. That is the kind of opportunity that today the world offers. The only thing is that we have to skill ourselves, equip ourselves, and ensure that when service exports are growing, when the country is registering $750 billion of export in the last financial year 22-23, and out of them
There's a huge portion of service exports, and in that there is huge amount of accounting and auditing services which are being exported from India. And the growth rate in this sector is 30%. 30% year-on-year growth in accounting and auditing services being offered from India to the globe. I think it is going to see light very soon in cities like here. We only need some young leaders, some people to take the charge and see how you are able to develop this kind of practice here. Sitting in smaller towns of Rajasthan or any part of central region, or maybe for that matter any part of the country. Friends, very importantly, I would also like to share with you that we have council members here who have been putting tremendous efforts and hard work in ensuring that the institute is able to not just look forward to the 1st of July when we celebrate our 75th foundation, but we are able to effectively regulate as the regulator of the chartered accountancy profession. And today we have 3 central council members from your very region who you have elected and sent to the central council. Anuj Goyalji, who is chairing the research committee, and this year international research awards are going to be held where research is being invited from across the world. My request to all members present here today would be, you like to see ICAI prosper, you like to see the brand of ICAI. If you look at any international accounting body or international education body, if Harvard is famous because Harvard comes out with Harvard Business Review. If any accounting body is famous across the world, it is because of the quality of surveys, the quality of research papers that they are able to publish, and that gets recognized across the world. And when I am in Rajasthan, which I truly believe, अगर चाइना के बाद किसी भी जगह में काम करने की, मेहनत करने की शिद्दत से लगे रहने की अगर किसी भी धरती में किसी भूमि में ताकत है तो राजस्थान में। आप कहीं भी चले जाइए, go to any part of the country, and the most hard-working workforce in any field, it may be business, it may be profession, it may be trade, wherever you are working, one of the most hard-working people come from the state of Rajasthan. And therefore, I make this appeal to all chartered accountants here. Please participate in research activities. You have a very strong academic build of mind. So many times we are seeing the top rankers coming from Rajasthan from the central region. And therefore, I would request Chairman Kishore Baradia ji and the entire team of CIRC, please try and popularize research in your region. Try and see how we can come out with the best research papers and showcase not just to India, not just to the government or other stakeholders, but to the world at large, the quality of material of chartered accountants that we have in terms of our activity. A very important activity that Anuj also leads, and I think it's very important for me today to share with you, is peer review. And he was mentioning only last week he had come to Ganganagar for doing a program of orientation to enroll more peer reviews. And the idea is that today when institute is mandated, if you are more than 5 partners in a firm, come 1st of July, your peer review is going to be mandatory. He wants to ensure that we have enough peer reviewers available in the entire country who are able to peer review. And why peer review is important? I came to know that यहाँ जो बैठे हैं काफी चार्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं लार्जली ट्रेडिशनल एरिया ऑफ वर्क में, और मैं देखता हूँ जब भी मैं छोटी ब्रांचों में जाता हूँ, चेयरमैन से बात करता हूँ कि भैया कौन सा प्रोग्राम किया, बोलता है सर ऑडियंस लानी है तो इनकम टैक्स का जीएसटी का प्रोग्राम है, क्योंकि अगर मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कोड ऑफ एथिक्स पे प्रोग्राम करूँगा तो शायद जितने मैनेजिंग कमेटी में मेंबर है उतने ऑडियंस में होंगे। और ये एक चीज़ है जो हम सबको समझनी होगी, सुधारनी होगी। हमें लगता है कि हमने जब ऑडिट कर लिया, आर्टिकल में 3 साल सीख लिया, ऑडिट और क्या होता है। आज ज़माना बहुत बदल गया। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, I truly believe majority of you perform high quality audits, but it is not about the quality of audit that you proclaim or you think you have done, but it is more important the quality of audit that you are able to showcase that you have done. And how will you be able to showcase that audit? You can only do it through audit documentation, through following the standards of auditing. These standards of auditing are not a thrust or a burden on you. Please, in fact, SQC, standards of auditing, accounting standards, these are all there to help and aid you to prove that you have actually conducted an audit meeting the expectation of all the regulators. And therefore,
my earnest request to all managing committee members of this branch would be, though there may be lesser crowd, lesser people coming, please have more programs on accounting standards. It is with this intention that on 21st of April, for the first time, Institute celebrated Accounting Standards Day. Why? Because today, if you look at the world and you go to any room, any hall, any group of people, और अगर आप उनसे पूछेंगे, आप चर्चा शुरू करोगे पैरासिटामोल की, सब बोलेंगे हाँ सर दर्द होता है पैरासिटामोल लेना चाहिए, बीपी ये होना चाहिए, कोविड में ये ब्लड का काउंट होना चाहिए. कोई डॉक्टर नहीं है और सबको ये सब मालूम है डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है. मेरी समझ से हमारा प्रिस्क्रिप्शन एक ही है कि आपके अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं और मैं उसे सर्टिफाई करके दे दूँ. पर कितने बिजनेस ओनर्स जो आपके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते भी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में. उसे तो 30 तारीख की ड्यू डेट है, शाम को 4 बजे उसके पास बैलेंस शीट आती है, 4:15 बजे साइन होकर वापस आ जाती है और 4:30 बजे अपलोड हो जाती है. उसे कौन समझाएगा कि व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू वैल्यू इन्वेंटरीज, व्हाट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस दैट हैव टू बी मेड टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Today, if you expect that other professions are respected in such a high dignity, but while we are not able to meet, of course, ours is a very respected profession, make no doubt about it. But if you want to go to the next level, the requirement is that you have to also spread awareness about these compliances, not just amongst yourself, among chartered accountants, among students, but among users of financial statements, so that they start appreciating कि मुझे जो 3CB मिला है उसके साथ एक बैलेंस शीट अटैच की गई है, वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने. जो ऑडिट किया है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है. उसने मुझसे एंगेजमेंट लेटर लिया है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन किया है और हर एक वर्क पेपर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है. एंड देयरफॉर विद दिस इंटेंशन वी सेलिब्रेटेड द 21st of April as Accounting Standards Day, and going forward it is going to be very important for us to draw attention of the common public, and we are going to do that in our 75th year to make sure that public at large, general public knows about these very important aspects. We also have with us Rohit Duwadia ji, who is leading the cause of career counseling. He very rightly mentioned, so I will not repeat it, but he is also the vice chairman of CMI, the Committee for Members in Industry and Business. Today at the institute, every result, May or November, when the results come out, close to 12,500 students qualify and become eligible to apply for membership. Out of those 12,500, close to 10,000 are today choosing to go into industry. And therefore this committee is very important because it deals with members in industry and business. And this year a very unique program was organized by them. He himself being a young, probably one of the youngest council members in history of ICAI, and most certainly the youngest council member of this 25th council. He organized as the vice chairman a very unique program of 40 under 40, where 40 chartered accountants who are in industry, who are in business, who are CFOs, who are doing their own startups or own companies as CEOs, they were recognized and awarded by CNBC in a program held in Delhi and telecast across the country and across the world. And this was done to encourage younger chartered accountants to have young role models whom they can look up to. So Rohit, some fantastic work that you are doing in career counseling. Tomorrow, in fact, he is going to Jaipur to have a huge career counseling mela where ICAI is going to be participating. Ganganagar, he quoted me when I say this, and I say it very often. I say it to not just the staff of ICAI, I say it to every member, I say it to every student. I am the I in ICAI. ICAI का I मैं हूँ, और जब ICAI का I मैं हूँ, तो शुरुआत भी मुझसे, अंत भी मुझसे, इंस्टीट्यूट भी मैं, इंडिया भी मैं. और जिस दिन हमने ये भावना ले ली कि इंस्टीट्यूट भी मेरे में है और इंडिया भी मेरे अंदर है, मान के चलिए कोई भी शक्ति इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन पे या ऑडिटिंग प्रोफेशन पे उंगली नहीं उठा सकता. Only thing which is required is that today we all have to understand that we have a role and responsibility to perform towards the institute and also towards the nation. What is very important and very critical, and my request to you
is that today in the world of WhatsApp University, when something gets forwarded, without thinking, without even applying our mind, Twitter, social media, WhatsApp, this is an easy aspect that we directly post our views. I'll talk about a recent development today itself. India's FATF, that is review of its Financial Action Task Force, it's an international body, आप सबने सुना होगा, पाकिस्तान को बीच में ग्रे लिस्ट किया गया और उसकी वजह से कोई फंड्स उस कंट्री को नहीं मिलते। वैसे कई देश हैं, पाकिस्तान का नाम इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे बताया गया यहाँ से बहुत पास है, 10 किलोमीटर क्रॉस करते ही आप वहाँ की बॉर्डर पर पहुँच सकते हैं। उस देश में FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाला, उसका मतलब कोई फॉरेन बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF उसे फंड नहीं देते। इंडिया का FATF रिव्यू इस साल होने वाला है और जब FATF का रिव्यू होता है, there are recommendations that FATF has made. If you go to para 18 to 23 of the FATF recommendations, it talks about money laundering and funding for terrorism. And therefore, very important, they are taking various steps in all the countries in the world so that terrorists and financial fraudsters do not get access to laundered money. और इस वजह से FATF के रिकमेंडेशन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन आज रिलीज किया है इन द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट टू द PMLA लॉ, where section 2 subsection 1 clause SA has been amended to state that chartered accountant, company secretaries and cost accountants, if they have information where their clients, खुद नहीं, अगर उनके क्लाइंट के बिहाफ में ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कोई कर रहा है तो वो कवर किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? किसी ने पढ़ा नहीं, सीधे व्हाट्सएप पे आप मैंने बोला CSCA में PMLA में शामिल है, भैया नहीं शामिल। उस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि इन तीन प्रोफेशंस को अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन उनका क्लाइंट कर रहा है तो आप एक रिपोर्टिंग एंटिटी बन गए और आपको उसे रिपोर्ट करना होगा। There are already multiple reporting entities which are notified. It includes registrars, which registers your document. It includes real estate brokers, because these are transactions, buying of real estate, incorporating certain companies to channel and fund money. और अगर इस चीजों का अगर आपको जानकारी मिलती है तो आपको उसे रिपोर्ट करना है। And tell me which chartered accountant in practice, if he finds that money is being used for terrorism or for such purposes, would not want to report it. In fact, we have so many guidelines already in place for our members to take care of this. NOCLA has been made mandatory, which says that if your client does not have compliance of other laws and regulations, you have to suitably modify your report. We also currently have very strong KYC requirement. Way back in 2017, this was updated, where any work that you do for your client की KYC तो आपके पास होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट तो इंस्टीट्यूट ने पहले से स्पेसिफाई किया। What I'm trying to tell you is, जब ज्ञान जी ने बात करी I and the I in ICAI, शुरुआत मुझसे, अंत मुझसे, इंस्टीट्यूट भी में और इंडिया भी में, तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, I think हमें मन में इंस्टीट्यूट को और हमारे देश को रखना होगा, and therefore when such transactions are appearing before one, of course it is going to be the responsibility. The entire mechanics of this is going to be issued in due course of time, but one has to report it, and I don't think there is any panic that one has to get, because I don't think any of you here are either working, and if you are, I'm sure you are not, or knowing any terrorist. I think that is one person that we all want to be away from. Therefore, this is not something which is impacting, but sometimes because of our lack of reading or understanding or apprehending what changes are coming, we become in certain ways social media mongers or we spread false information. And therefore, I think very important statement that Gyanji made is important, that we don't always ask what ICAI does for me or what ICAI is doing for me. John F. Kennedy was president of the United States, and he very rightly once said, ask not what America can do for you. Ask not what America can do for you. Ask what you can do for America. Similarly, I think ये भावना हमने होनी चाहिए, देश ने मेरे लिए क्या किया, इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए क्या किया, उससे पहले आप एक सवाल मुझसे पूछिए, मैंने देश के लिए, मैंने मेरे इंस्टीट्यूट के लिए क्या किया. So Gyanji, thank you for those references of ICAI. He is also leading very importantly the Tender Monitoring Directorate this year. He is also the chairman of the Insolvency and Bankruptcy Law Committee and vice chairman of the CPE Committee. And as you have seen this year, some changes have been made in the CPE Committee. We no longer have a block of 3 years. CPE को 1 साल में खत्म करना होगा.
और काफ़ी लोगों को ये सवाल होता था कि सीपी नहीं किया तो क्या। इस पे भी ज्ञान जी और उनकी कमेटी काम कर रही है। आप सबको कुछ समय में मालूम पड़ेगा। देयर आर नॉन कॉम्प्रेहेंसिव सीपी, definitely there is now going to be certain action. We have given members 20 years to comply with CP, but now it is going to be important for us to enforce so that we are able to see that all members are keeping themselves updated and staying up to the mark in terms of the regulations, the laws, the standards of auditing and the standards of accounting. I will also on this juncture speak about the very interesting proposal that we have in terms of the institute. In November this year, we have been given, rather last year we were given the opportunity to host the World Congress of Accountants. It was recognized across the world as one of the best World Congress ever seen, and a matter of pride for us that it was hosted in India for the first time in 118 years. And anywhere in the world that you go, people say that it was the world's best World Congress. And being inspired by it, we have decided that ICAI is going to organize GLOBAC, the Global Professional Accountants Convention, on 24th, 25th and 26th of November at Mahatma Mandir in Ganganagar, Gujarat. I invite you to be a part of this global conference where accountants from across the world are going to be invited. You will have a wonderful opportunity to network amongst your peers from across the country and an extraordinary, not just learning experience, but more importantly, a very wonderful networking experience that the institute is going to provide to all of you. I also urge all members, this year KYM, Know Your Members, has become mandatory. Please see that you go to the SSP portal and update your details. It is to be done as a one-time activity, and in the future, only if you change your address will you have to update those details. But I request and urge all senior members, especially sitting here, you may take the help of younger members. The branch team is here, you may help or have a help desk at your branch so that senior members can come with their documents, you can scan them, resize them and then upload them because KYM should be ensured. Why? क्योंकि आज आपके 450 मेंबर्स हैं और मुझसे चेयरमैन जैसे ही नीचे बैठे कह रहे थे कि अरे वो मेरे मैनेजिंग कमेटी वाले बोल रहे हैं माइक दीजिए, क्या है कोई रिक्वेस्ट करनी है आपसे। बोला रिक्वेस्ट मैंने सुन ली, रोहित जी ने ऑलरेडी मुझसे बात कर ली है। आप सबकी अपेक्षा है कि यहाँ एक ब्रांच का भव्य बिल्डिंग बने और मैं इतना ही कहूँगा कि इस KYM होने से हो सकता है कि काफ़ी मेंबर्स जो एक्चुअली यहाँ हैं और उनका एड्रेस कहीं और है वो अपडेट कर लेंगे और आपके मेंबर्स 500 से ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर 500 से ज़्यादा नहीं होते हैं तो भी मैं आप सबको एक चीज़ बताऊँगा कि हाल ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हमने एक सब ग्रुप बनाया है जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को देख रहा है। उसका क्या परिणाम होगा वो मैं आज नहीं कह सकता क्योंकि वो ग्रुप तय करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी में आएगा और वहाँ से काउंसिल में जाएगा। पर हमने उस ग्रुप को 2 महीने का समय दिया है और 1 जुलाई के पहले जो काउंसिल मीटिंग होगी उसमें हम इस रिवाइज्ड पॉलिसी को अप्रूव करना चाहेंगे। और अगर इस पॉलिसी में कोई भी चेंजेस हुए विच आर बेनिफिशियल फॉर योर ब्रांच to ensure that we can provide world class infrastructure to you. तो आज वाइस प्रेसिडेंट सर, हमारे सारे काउंसिल मेंबर और मेरे खुद के बिहाफ पे आप सबको इतना अश्योरेंस देता हूँ that we will be one of the first supporters of having our own land here in Sri Ganganagar. सबसे पहले डेफिनेटली उसका फायदा श्री गंगानगर ब्रांच को मिलेगा और KYM होने से भी अगर आपके मेंबरशिप में जो फेरबदल होंगे उसके कारण में मुझे पूरा भरोसा है that you will qualify. I am extremely pleased coming here to see the growth of membership. आप बता रहे थे सर कि जब आपने ब्रांच शुरू की तो 50 मेंबर भी इकट्ठे करने में दिक्कत आ रही थी और आज 450-500 मेंबर की ये ब्रांच हो गई है और मैं ऐसा मानता हूँ more than the members. It is extremely critical and important for the students who are our future members who require world-class infrastructure for their GMCS, for their ITT, for their OT training. And therefore, I personally come from branch. I have been chairman of the branch, and I am extremely, I would say, delighted whenever I come to any branch. And it's my heart that says that each branch requires its own infrastructure, its building,
of course subject to a certain size, because only then can you grow the size of the membership and more importantly attract the best talent to pursue this course of chartered accountants. So with these words, I conclude my address. Thanks from the bottom of my heart to the entire Sri Ganganagar branch, all the members, all the students, for all the love, affection that you have showered upon us. This is truly going to be one of the most memorable days that we have had and traveling across the country, and especially coming to these smaller branches. I thank each one of you. Jai Hind, Jai ICAI. No words left, already told. Thank you, man himself, representing the highest acclaimed profession all over the universe, sharing facts, seeking wisdom, resenting updation, with the pious thoughts, innovation in the technology, and most important, what you are contributing. Sir, आपने एग्जाम्पल दिया कैनेडी का, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप ही की तरह एक exemplary, the extraordinary president of India, Sir APG. He says what you can give. Always when you start your day, ask a question to yourself, आज मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ? With that thought, you can change the eternity, not for yourself, for the existence. And believe me, sir, this thought, what Gyan sir shared and you progressed, what we can contribute to the society, and that is a bliss. Believe in yourself and start leading the way. An exemplary leader, our President ICAI. Set your example for yourself. It starts with me, it ends with me. What a beauty. And the right utilization of skills, what you told about the content of the prosperity, being within and being in the society. Those shabds are with the recognition. कहते हैं न पद बड़ा न कद बड़ा, न पद बड़ा न कद बड़ा, जिसने सीखने का जज्बा सीखा वही सबसे बड़ा। तो with the bliss and bliss of our guest tonight, we are moving to the most prestigious part of golden, memorable history of this branch, honoring the leaders. Wow, there's a goosebumps. मुझे याद है सर वो समय जब ये ब्रांच नहीं था, मैं यंगेस्ट फैकल्टी हूँ इस ब्रांच की, तो पल साहब के चेहरे पर हंसी आ रही है मैं क्या बोलने जा रही हूँ। मुझे याद है होटल में ये बच्चों का ओरिएंटेशन होता था, भाई साहब को याद होगा, एक बच्चे से पूछने आते थे खाना खाया, खाना अच्छा लगा, कोई परेशानी तो नहीं। और इवन जब पहली ब्रांच जब BCA के सामने आई, मुझे याद है बैठने में दिक्कत तो नहीं हुई, लेक्चर लेने में दिक्कत तो नहीं, वो एक गोल्डन समय था। और जो भी यहाँ बच्चे उस समय के बैठे हुए हैं वो साक्षी होंगे सर का डेलिब्रेशन, सर का पेशेंस एंड द मोस्ट होलिस्टिक एंड humblest of all the leaders for this branch. I remember always, मैम मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता था as my elder brother, he is a torch bearer for all of us. So standing ovation for the man himself, CA Pawan Mittal. I request all the dignitaries on the dais to pay honor to our chartered president, CA Pawan G. Mittal. इधर आ जाओ, सर इधर आ जाओ। शब्द कम है, ऐसा भावनाएं बहुत हैं। The charter president, the former president, the visionary president of
CA SK भूतड़ा सर, शशि सर 2015-2016 के सेशन में आदरणीय शशि सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, हमेशा सही शब्दों के चुनाव के साथ प्रेजेंट रहते। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय CA SK भूतड़ा जी। अग्रिम पंक्ति में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय CA विकास गर्ग जी, 2016-2017 सत्र के चेयरमैन CA विकास गर्ग जी। तैयार रहे आदरणीय CA प्रमोद गुप्ता जी, सेशन 2017-2018। तालियों के बीच उत्साहवर्धन के साथ आदरणीय CA जतिन अरोड़ा जी, सेशन from 1 March 2018 to 10 August 2018। आदरणीय CA कमल जी गर्ग, 2018-2019 सेशन। आदरणीय CA नीरज जी गोयल, 2019-2020। आदरणीय CA the young dynamo within CA सुनील सेठिया, सेशन 2020 to 2021। एवं आदरणीय CA आशीष जी गुप्ता, सेशन 2021-2022। तालियां बजती रहे और एटलीस्ट आप लोग बजाएं, क्योंकि आप ही लोगों में से उठकर ही यहाँ पहुंचे, तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए प्रेरणादायक कदम है, प्रयास है। आदरणीय CA धीरज जी लीला, the immediate past president with the brightest smile, a jovial personality within CA धीरज कुमार लीला। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी डजन ऑफ प्रेसिडेंट्स के लिए। A big hand for all. Moving ahead, I love to call with so much of gratitude within the thoughts and mind all the conveners themselves for the event tonight. CA Pavanji Mittal, CA Vikas ji Garg, CA Neeraj ji Chawla, CA Shiv Golyan ji, CA Sunil ji Sethia, CA Vijay Midha ji, CA Pavan ji Singhal, CA Raghav ji Goyal, all the 8 conveners, a big hand for all the 8 diamonds of the event. सभी के लिए तालियां, सभी कन्वेनर्स। गंगानगर ब्रांच की अनुमोदना की, सराहना की, सभी ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ब्रांच जयपुर, ब्रांच बीकानेर, ब्रांच हनुमानगढ़, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी ब्रांचेस से। यहाँ जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की। हाँ थक गए। प्रेजेंट साहब का एक अनुरोध करूँगा, मैं अपने वंडरफुल एमओसी इवनिंग को समापन एक मैच के लिए जोरदार तालियां, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जोरदार तालियां। डॉक्टर निकिता शर्मा। लेट आए तो लेट सर से
ठीक करोगे हम छठ दो दिन ट्रेन में दिया फ्राई वाला Thank you, sir. Thank you for your prestigious presence. God bless with your health, with a high spirit. Thank you. Ji, moving ahead, waiting for the session, the open discussion forum. There were few questions by our CAs, by our students. So all the dignitaries on the dais. There's a query from CA Neeraj Goel. CA Neeraj Goel. Ji sir, you may proceed with your query. Come forward. Take the mic. सामने ग्राउंड है फिर ग्राउंड छोड़ कर फटाफट चलिए अरे सामने चार बंदे की पिक्चर मैं कैमरा कहाँ का है इन्होंने याद की है ना अभी दूल्हा दुल्हन आदि मस्जिद में चलाना गाड़ी में क्या करेगा शादी में गड्डी आराम होगा आराम थोड़ी देर में रोटी भी खा A matter of pride, privilege. The man himself, the head of the family. हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी जी। परिवार में पधारने पर सर का आभार, अभिनंदन, स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय मेरा आग्रह रहेगा सीए राकेश जी गुप्ता, सीए आर गुमनानी जी से आप सर का सम्मान करें। आदर, सत्कार, अभिवादन। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रेजेंटेशन ऑफ बुके, प्रेजेंटेशन ऑफ साफा, शॉल एंड मोमेंटो टू आवर गेस्ट, द मैन हिमसेल्फ। आदरणीय पवन मित्तल जी, आदरणीय नीरज चावला जी से मेरा आग्रह है आप कलेक्टर सर का सम्मान साफा पहनाकर, शॉल बढ़ाकर, बुके भेंट कर। आदरणीय सीए अनिल अग्रवाल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बुके भेंट करें, साथ ही मोमेंटो भेंट करें आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय। सारे ग्रुप बनाओ तो ग्रुप भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से मेरा आग्रह 2 मिनट उत्साहवर्धन के कुछ शब्द। अगर आपने इन्हें नहीं सुना तो निश्चित तौर पर आज की जो गोल्डन शाम है उसमें कुछ कमी रहेगी। तो बिग हैंड फॉर द मैन हिमसेल्फ सौरभ स्वामी। आदरणीय मंच, यहाँ पे उपस्थित सभी गंगानगर जिले के सीएस, एक बहुत ही अच्छा एक ओकेजन है क्योंकि अपना जो वर्क है सीए का जो एक काम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरमाइंड रह जाता है। हम पर्दे के पीछे छुप के और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलती है, वो कैसे ढूंढनी है और ढूंढ के उसको कैसे ठीक करना है, ये हमारी विशेषता है। और उसी के अंदर भी हमारा सबसे मेन रोल है कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, कहीं ना कहीं वो
वो ही चीज डिटरमाइन करती है आगे जाके कि हमारी प्रैक्टिस कैसे होने वाली है, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलने वाले हैं और हम कैसे आगे जाके अपना कैरियर बिल्ड करने वाले हैं। मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ सीए हैं, तो मैंने काफी नजदीक से इस काम को देखा है कि किस प्रकार से कैसे जब ऑडिट्स होते हैं, हमने अपने डिपार्टमेंट्स के भी बहुत ऑडिट्स करवाए हैं, तो कैसे एक सीए गलती को पकड़ के और उसको या तो पॉजिटिव रूप में उसको ठीक करवाना या नेगेटिव रूप में उसको लेके जाके और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैसे क्या कर सकते हैं, दोनों ही अपने हाथ में। मेरा केवल एक ही जो मेन वो है आ जाने का, क्योंकि मैं मिस कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि अचानक से ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट आ गई थी कि वो एक सीए साहब अपने बाहर भी बैठे हुए थे, वो भी इंतजार करते रहे, तो ये आई गए अभी, है ना, तो ये बेचारे इंतजार करते रहे थे। तो पहले तो इनसे भी मैं माफी चाहूंगा और आप सबसे माफी चाहूंगा कि ये एक अच्छी एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि मैंने मिस की। लेकिन इन नटशेल यही है कि जितने भी लोग जो प्रतिभागी भी हैं, जो नए बनने का सपना भी देख रहे हैं और जिन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश भी किया हुआ है, उन तीनों ही लोगों के लिए केवल एक ही संदेश है, एक ही प्रैक्टिस कि अपनी इंटीग्रिटी, मोरालिटी, वो सारी चीजें मेंटेन करके चलें। कई बार दिमाग में ये भी आता होगा कि हम शायद जो है हमारी जो नॉलेज है हमारे फील्ड में, वो शायद जो IRS अधिकारी जो बैठा है जिससे हम डील कर रहे हैं, शायद हमारी उससे भी ज्यादा है और होती भी है कई मामलों के अंदर, है ना। लेकिन कैसे टैकल करना, कैसे डील करना, कैसे क्लाइंट को बचा के और निकाल के लेके आना, यही कला है जो कि सीए के अंदर जो है, जो सबसे मेन है, वो सबसे अच्छे से होनी चाहिए। जो बच्चे हैं आज प्रिपेयर करने वाले बच्चे भी नहीं, हाँ, तो जो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केवल इतना ही है कि सीए अपने आप में बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है ना। और अगर उसके बाद भी मेरे काफी सारे ऐसे बैचमेट्स भी हैं जिन्होंने पहले सीए किया, 2-3 साल जॉब करी, उसमें मन नहीं लगा, IAS का एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया। एक तो ये बात तो माननी पड़ेगी हमें कि यार था ग्रीन, है ना। और अगर हमें लग रहा है कि हम अपना टैलेंट अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो अगेन इट इज नॉट द एंड एज वेल, ठीक है। आप अगर इस साइड में अच्छा नहीं कर पा रहे या इस साइड में आपकी जो उम्मीदें थी उसके ऊपर हमें लग रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस साइड में IRS में आके और उससे अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ के ऑप्शन है, कई लोग इस चीज को एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है कि IRS कस्टम्स के अंदर या एक्साइज के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर जितने ज्यादा सीएस अगर इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से दोनों साइड की जो नॉलेज होगी वो अगर फ्लो करेगी, तो ज्यादा अपना जो है काम स्मूथली चल सकता है। इसके साथ ही एक और चीजें हैं जो कि मैंने देखी है। पहले क्या होता था कि मैं सरकारी डिपार्टमेंट की बात करूंगा, जब किसी डिपार्टमेंट का हमें ऑडिट कराना होता था, तो इन दैट केस ये देखा जाता था कि हम टेंडर लगाते हैं, लॉस्ट बिड कॉल करते हैं, तो जो फर्म्स आ गई हैं, फर्म्स क्या करने लगी हैं कि वो इतना ज्यादा लोअर कोट कर देती हैं पैसे को कि इंसान के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है ना, अगर वो भी निकल जाए और फिर इंटर्न्स को भेज के अपना काम करवा लेती हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इस चीज का आपको एक हल ढूंढना चाहिए कि आपको एक मिनिमम एक बैरियर सेट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि केवल वहां पे जाके जो डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट ने जो बना के दे दिया, अगर मेरे को उसी पे साइन करना है, तो फिर मैं इतनी मेहनत करके मैं सीए बना, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हम अगर हम एक कॉम्पिटेंट कोर्स लगाएं, अवश्य लगाएं। मतलब मैं खुद देख रहा था यहाँ पे, मैं MD, मेरे पास मैं बैंक का मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक का, तो हम जब सीए के ऑडिट्स देते हैं तो उसके अंदर एज लो एज 1000-2000 रुपये पर ऑडिट की शायद रेट बनी हुई है। वो बंदा घरसाना जाएगा, वहाँ पे ऑडिट करके वापस आएगा, 1000-2000 रुपये में एक इंटर्न भी भेज रहा है, या उसके मुताबिक तो सीए ही है, उसको भेजेगा, उसके ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसके खाने
इससे नीचे लोग जाएंगे कि चाहे मेरी एक बहुत बड़ी फर्म है, चाहे मैंने खुद अपने लेवल के ऊपर एक छोटा सा बिजनेस मैं चालू कर रहा हूँ। ये सरकार की तरफ का, मेरी तरफ का एक वो था सजेशन, जो कि मैं काफी जगह पे देख चुका हूँ। चाहे मैं पंचायत समिति के उसमें बात करूँ, वहाँ पे भी अपने ऑडिट्स होते हैं। एक ग्राम पंचायत का भी ऑडिट होता है। अपने को लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन लगभग 12,000 पंचायतें हैं पूरे राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें। एक बैंक का, छोटे से छोटे बैंक का ऑडिट होता है। एक हमारी ग्रामीण सहकारी समिति का ऑडिट होता है। मैं तो गवर्नमेंट वाली बातें करूँगा। तो उस केस के अंदर मैं बता कि वी हैव टू बी, मतलब morally also we have to be correct, and जो गलतियां हैं गलतियों को पकड़ के और आगे तक उसको लेके आना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने अगर आई एम डूइंग गवर्नमेंट वाला काम और प्राइवेट वाला काम, तो अगेन मैंने आपको बताया ही कि वी नीड सीएस ऑन आइदर साइड के आईएएस के अंदर भी आए और थोड़ा सा वो करें। ये मेरे कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे जो कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रेलिवेंट है। और जो यंग जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए केवल इतना ही है कि इट इज ए गुड थिंग बट इट इज नॉट द एंड। आगे भी अपने को मेहनत करके आना है और निकलना है, अच्छा करना है। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैडम, जस्ट अ मिनट। First of all, sir, thank you very much for coming in this chartered accountant function out of your busy schedule. He is our president, Institute of Chartered of India, and we have 3.7 lakh members and 8 lakh students across the country, and we have 170 branches. Ganganagar is one of them. So like this, we have 170 branches across the country. 2 points you have raised. Let me tell you, sir, we have a tender guideline issued by the Institute of Chartered of India, which says that any statutory function which can be performed by only chartered accountant, the minimum fees in the tender document, if it is not there, the member cannot respond to the tender. And the minimum fees which has to be tendered has to be commensurate with the size, volume and manpower requirement of the work. And if that minimum fees is not there, our member cannot respond to the tender. I am talking about the statutory audit as per the legislation of this country, where only CA can do. So now those members who are responding to those tenders where minimum fees is not there, disciplinary proceedings are initiated. So far 32 members are already held guilty in this regard. We have a tender committee headed by our other council colleague Ganganagar, where if the members are quoting low fees, like you said, some examples are there. He is asking the costing, the working, how he is able to do that job in that fees. And if they are not able to satisfy to the group in the tender monitoring group, then again disciplinary proceedings are started against those members. So 2 steps we have already taken. On your part, just to educate you, our chartered accountants are many CA who are here in public service also. They are CA and then the IRS and IPS over there. So we are taking a lot of input from those members also. Whenever this audit tendering is happening, the minimum fees guideline from ICAI is there. We will send you the guideline. You please ensure the minimum fees should be there in every tender you are issuing on your part. So this is the 2 updates we want to make you, sir. We are trying to regulate to the best possible. Still some bad apples are there and we are taking action against those members. But let me tell you, sir, the kind of economy India has, the kind of growth we have, we are only 1,50,000 member practicing member. So this number is very minuscule. People may be thinking they will not get the job, but there is no dearth of the work in this country. If they are very, very qualitative family with the best of the ability, there is no dearth of the work in this country for chartered accountants.
So they have to understand that also. So thank you very much sir for coming. And if our president sir want to add something, I will make it. So thank you sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the words of motivation and wisdom by District Collector आदरणीय श्री सौरभ जी स्वामी। सर एक बहुत अच्छी बात रखी कि ये कमियां तो बहुत निकालते हैं, बट यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कमियों को सही कैसे करते हैं ये बताते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। चलिए, तो लीडिंग अहेड, मूविंग टू द finale of this program, I love to call CA Prateek Ji Goel, Secretary of the branch Ganganagar, to deliver vote of thanks in front of all. जोरदार तालियों के साथ CA Prateek Ji Goel। Good evening, everyone. It's a really proud moment for all of us, right? That the president and the vice president and the council members, RCM members, all are here. Thank you so much, President sir, Aniket Radi ji, Vice President sir, Ranjit Agarwal ji, CCM members, Jila Collector sir, Saurabh Swami ji, thank you. And हमारे CC member रोहित वाटिया जी थे, वो अभी निकल गए, जान मिश्रा जी, अनुज गोयल जी, हमारे CIRC चेयरमैन एंड दूसरे ब्रांच से पधारे हमारे जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ ब्रांच के साथी और मेरे गंगानगर ब्रांच के सभी मेरे सीनियर कलीग्स एंड TPA हमारी एसोसिएशन की तरफ से पधारे पदाधिकारी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़े पेशेंटली हमें सबको सुना और हम प्रेसिडेंट एड्रेस और सबके एड्रेस सुन सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस मेकिंग दिस मेमोरेबल मोमेंट अलाइव। एंड प्रेसिडेंट सर मैं 2 मिनट लूँगा। मैं आपसे हम विश करते हैं मैनेजिंग कमेटी कि जो आपके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर जो लैंड अलॉटमेंट होगी, हम विश करते हैं कि ऐसा ही एक समा हम जो एक जब भूमि पूजन होता है उस पर भी जरूर करेंगे और आपके कार्यकाल के अंदर कर पाएंगे। मैं ऐसा विश करता हूँ और सौरभ स्वामी जी भी उसमें होंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि सर के साथ एक पिक्चर क्लिक करेंगे सभी मेंबर्स से और साथ में TBA एसोसिएशन को भी इनवाइट करता हूँ कि सर के साथ अपने पिक्चर लेंगे। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरीज है अपने सर के साथ कभी मर्जी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। डिनर इज वेटिंग फॉर यू एंड वी हैव अ ग्रेट म्यूजिकल इवनिंग आल्सो, प्लीज एंजॉय। एंड बच्चों स्टूडेंट्स स्टूडेंट प्लीज आई रिक्वेस्ट आप सबसे पहले आइए, सबके साथ एक फोटो लेंगे। आई रिक्वेस्ट प्लीज कम, एनी क्वेरीज अभी। थैंक यू। छोटे आए जयपुर ब्रांच अंकुर जी, रुचि जी अभी प्लीज, अंकुर जी प्लीज, विष्णु जी,
It's honor. फोटो हो जाएगी सबकी आने दीजिए आ जाइए इधर साइड में हो जा हेलो ऐसे हाँ जी सर अच्छा और 10 आ रहे हैं भेज दो सारा स्टूडेंट होगा सर आ जाओ Thank you so much. Jaipur branch, please. Vishnu ji, Ankur ji. हनुमानगढ़ ब्रांच सभी ब्रांच की फोटो ले लेते हैं। आई रिक्वेस्ट हनुमानगढ़ ब्रांच, जयपुर ब्रांच। ये सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं। सामने देखिए सर प्लीज। ओके सर। जयपुर ब्रांच सर प्लीज। अंकुर जी प्लीज। आओ सर आओ सर इधर
फटाफट सर प्लीज ओके सर थैंक यू Thank you everyone. हाँ जी सर प्लीज वेट सर ओके सर थैंक यू फिर मिलेंगे मैं फिर अंदर हूँ यार आपके नहीं सही में है ना मैं नेक्स्ट टाइम